Here we have respiration chapter, and we are doing test yourself from page 100 and 101. The first question here is explain the difference between aerobic and anaerobic respiration. So सबसे पहले aerobic और anaerobic का word जो आपका literal meaning है वो आपको पता होना चाहिए. So aerobic means with oxygen. Anaerobic means विदाउट ऑक्सीजन. रेस्पिरेशन एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस है जो आपकी बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है. एनर्जी दोनों केसेस में प्रोड्यूस होती है इफ द ऑक्सीजन इज सप्लाइंग टू द बॉडी एंड इफ द ऑक्सीजन इज नॉट सप्लाइंग टू द बॉडी फॉर अ लिमिटेड time period. So let's start with the comparison. Aerobic respiration, the very first point is that it takes place in the presence of oxygen, or anaerobic respiration, it takes place in the absence of oxygen और लैक ऑफ ऑक्सीजन. एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की. आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है, जो एनर्जी यूनिट है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है और एनर्जी रिलीज होती है. जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के केस में पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होने की बजाय लैक्टिक एसिड या एथेनॉल फॉर्म होता है. इट डिपेंड्स कि आपकी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट्स में हो रही है या ह्यूमंस में. नॉन टॉक्सिक फॉर प्लांट एंड एनिमल्स, किसी भी किस्म की टॉक्सिसिटी नहीं है एरोबिक रेस्पिरेशन में एज कम्पेयर टू दैट. अगर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को देखा जाए तो ये टॉक्सिक है. एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक अगर ये प्लांट या एनिमल्स को कंडक्ट करनी पड़ती है देन दे बिकम डेड. एरोबिक रेस्पिरेशन हाई एनर्जी प्रोसेस है, 38 मॉलिक्यूल्स एटीपी के रिलीज करता है, जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में 2 मॉलिक्यूल्स पर ग्लूकोज एटीपी के रिलीज होते हैं जो कि बहुत कम एनर्जी है. रिएक्शन सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में ये रिएक्शन साइटोप्लाज्म में कंडक्ट कराया जाता है. एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारी एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के केस में एंड प्रोडक्ट्स लैक्टिक एसिड और एथेनॉल है अलोंग कार्बन डाइऑक्साइड. एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में जो इक्वेशन हम लिखेंगे दैट इज ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गोज टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी. And for anaerobic respiration, we will write two equations for animals: glucose converted into lactic acid and energy produced. And in the case of plants, glucose converted into ethanol, fuel, carbon dioxide releases, and energy is produced. So that is the difference between aerobic and anaerobic respiration. So the next question about the word equation of aerobic and anaerobic equations, we are already done with it. So here we have give one example of aerobic and anaerobic respiration. Aerobic respiration में वॉकिंग है, पैसिव वर्किंग है, मतलब कोई भी ऐसा टास्क जिसमें प्रॉपर इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, आपको सांस नहीं फूल रहा, दैट इज एरोबिक. एंड एरोबिक में रनिंग है, हर्डल रेसिंग है, बहुत तेजी से स्विमिंग कर रही हैं, ऑल दीज सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज जिसमें आपका सांस फूल रहा होता है, यू नीड मोर ऑक्सीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन, why less energy is released during anaerobic respiration than during aerobic respiration? So anaerobic respiration के केस में चूंकि हमारे पास कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो चुकी है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल डिडंट कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बल्कि वो मिड वे में जाके रुक जाता है, वो लैक्टिक एसिड या एथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो हमें कंप्लीट एनर्जी मिलती ही नहीं है. सो लेस एनर्जी इज रिलीज्ड during anaerobic respiration than during aerobic respiration because the breakdown of glucose is incomplete. The end product is lactic acid or ethanol instead of carbon dioxide and water. Partial breakdown of reactant generates less energy. Then why what do plants produce instead of lactic acid during anaerobic respiration? During anaerobic respiration, plant produce ethanol instead of lactic acid, जबकि lactic acid produce होता है animals में. Write a word equation for anaerobic respiration in plants. Glucose converted into ethanol, carbon dioxide and energy. You can write it in formula form and in simple word equation form. It's really up to you. Next question, what is another name for anaerobic respiration in plants? So that is fermentation. क्योंकि fermentation की reaction में yeast जो है वो आपकी glucose को convert करता है into carbon dioxide, water and energy release होती है, and ethanol form होता है उस केस में. So this is just the same reaction which is conducting in the case of anaerobic respiration plant. तो fermentation की term हम use करते हैं. fermentation वही reaction है जो आप during baking use हो रहा है, right? So list three things that yeast needs to ferment. yeast को fermentation start करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? food, sugar होना चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए और हीटेड इन्वायरमेंट होना चाहिए, बट दैट मस्ट बी कंट्रोल हीटेड इन्वायरमेंट. बहुत ज़्यादा अगर हीट होगी तो आपका यीस्ट डेड, इट विल बी डेड. सो
in the controlled temperature environment. Explain why it is not a good idea to water pot plants too often. देखिए अगर your soil contain water, oxygen and it contain minerals. अब अगर आपके उस सॉइल में पानी की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो सारी की सारी जो ऑक्सीजन है जो एयर है उसको रिप्लेस करेगा. इफ़ देयर इज़ नो एयर इन द सॉइल तो ऑब्वियसली रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगी, रूट्स जो हैं वो ब्रीद नहीं कर पाएंगी, वो बिकॉज देयर इज़ नो एयर इन द सॉइल तो रूट्स ब्रीद नहीं कर पाएंगी. सो दैट इज़ अ वाटर लॉक्ड सॉइल. वो सॉइल जिसमें जो एयर है उसकी जगह भी पानी इकट्ठा हो जाए, उसके पोर्स में पानी फिल हो जाए, उसे आप वाटर लॉक्ड सॉइल कहते हैं. अक्सर जब सैलाब बहुत ज़्यादा आ जाते हैं या पानी बहुत देर तक आपकी फील्ड्स में रुका रहता है, तो दैट सॉइल इज कंसिडर्ड एज वाटर लॉक्ड सॉइल. So that is completely not a good idea. It is not a good idea to water pot plants too often because water will replace the air present in the soil and roots will no longer be able to breathe. The roots of plants living in waterlogged soil have to use anaerobic respiration rather than aerobic. However, for longer time period, anaerobic respiration kills the plant due to ethanol production. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के केस में एथेनॉल प्रोडक्शन होती है. अब चूंकि एयर तो है नहीं तो वो ऑक्सीजन तो ले नहीं पा रहा. अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पिरेशन की वो एनाएरोबिक है, लेकिन उस केस में एथेनॉल की प्रोडक्शन होती है विच इज़ अ वेरी डिजास्ट्रस. Next question: if a sealed container of yogurt is left for a long time, the lid bulges upward. Why this happens? We know कि योगर्ट के अंदर ढेर सारे बैक्टीरियाज होते हैं which are very good for your health. बट ऑब्वियसली देयर आर बैक्टीरिया तो फर्मेंटेशन का रिएक्शन होगा क्योंकि वहाँ आपकी योगर्ट के अंदर ग्लूकोज मौजूद है. नॉट पर्टिकुलरली ग्लूकोज बट यू कैन सी इट्स अ सिंपल शुगर माल्टोज. सो दैट इज प्रेजेंट देयर. एंड ऑब्वियसली अब बैक्टीरिया है, रूम टेम्परेचर अगर नॉर्मल चल रहा है तो वो फर्मेंटेशन होगी. अगर फर्मेंटेशन होगी तो गैस रिलीज होगी और गैस ऊपर की तरफ उठती है बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी, तो वो जो आपके लिड है वो ऊपर की तरफ उठेगा, बल्ज अपवर्ड्स. So yogurt contains living bacteria. These bacteria undergo anaerobic respiration. They consume the sugar in the yogurt and release gas as their byproduct inside a closed container. Due to the upward pressure of gas, lid bulges upward. So it's not a magic, it's just a chemistry. And this is all from this section.